Good morning students. In previous video we have seen lesson number first, that is the best Christmas present in the world. In previous video we have seen what is the summary of this lesson. Today in this lesson we are going to explain this lesson. Okay, so let us start. Keep your PDF books open, okay, so that whenever I will explain, at that time you could go through that we can say lesson. Got it? So let us start. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. Correct? In our life also, in your parents' life also, there are some dates, correct, and years which they will never forget in their whole life. Just for example, suppose when you came in this world, at that time your parents were very happy. A broad smile can be seen on their faces, correct? So do you think your parents will forget the birth date on which you born? I think your parents will never forget, because that was the memorable moment of their life, that you came in this world and you became a part of their life, your parents' life. So that's why such significant events cannot be forget in our life. The story you will read mentions one such date and event. In this story also there is one date, that is 25th December, a Christmas day. And on that day a war between the British and German in 1914, when this war was going on. At that time when this Christmas day come, for that particular day the soldiers from Germany and soldiers from England, they stopped their war and they both collectively, togetherly celebrated that Christmas festival by singing, eating, drinking, by doing all such enjoying activities. In this story, an old woman, Connie, aged 101, received a present from a stranger who she mistakes for her long-awaited husband. So here one character is there. Her name is Connie, and she was 101 years old. So you know, this narrator of this lesson went to the Connie to give letter, but she misunderstood that this narrator is her husband. जस्ट लाइक शी मिस्टूक, उसको गलत उसको भ्रम होता है कि ये जो पर्सन आया है 101 ईयर्स के मेरे एज की लाइफ कंप्लीट करते वक्त, तो ये जो पर्सन है वो मेरा हस्बैंड है. यू नो, इन ओल्ड एज द ओल्ड पीपल्स मेमोरी इज़ नॉट दैट मच ऑफ एडवांस. वो डिग्रेड होती जाती है, उनकी मेमोरी जो है वो कम होती जाती है. किसी किसी को दिखता नहीं, किसी किसी का ब्रेन का इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि वो बराबर रिकॉल नहीं कर पाते चीज़ों को, वो अपने रिलेटिव को इवन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते. लाइक दैट. व्हाट इज़ द प्रेजेंट, द लेटर और द मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ द विजिटर? सो ऑल सच थिंग्स वी विल सी इन दिस लेसन. लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट. सो द author or the story writer of this lesson is Michael Morpurgo. Okay, so let us see. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The man said it was early 19th century and I had wanted one, but they were far too expensive. So there was one market place, that is Bridport. So there he went in a junk shop
मीन जहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें खरीदी बेची जाती है उस जगह पे वो ब्रिकपोर्ट में गया, मार्केट प्लेस जो थी। एंड द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and oak. Then the person who was showing him different types of roll top decks, he told to the narrator that it is of 19th century and made up of oak tree. I had wanted one but they were far too expensive. See, actually this narrator did not have enough money to buy new roll top decks because that were too expensive. This one was in a bad condition. So narrator said, pointed out one roll top desk and he said this one is in bad condition. The roll top in several pieces, बहुत सारे pieces में वो बट गया था. One leg clumsily mended, एक जो लेग थी उसकी पाव जो बोलते हैं हम लोग नीचे का, तो वो एकदम आधा सा दुरुस्त किया गया था, पूरी तरह से वो दुरुस्त नहीं था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड में जलने के निशान थे वो रोल टॉप डिस्क पे, जो वो अभी ख़रीदना चाहता था क्योंकि वो चीप रेट में मिलता, सस्ते में मिलता. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी एंड द बाइंग मनी ही कुड गिव टू द वी कैन से दैट ओनर वुड बी वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम लेस अमाउंट में उसको वो मिल सकता था, बहुत ही कम पैसे में. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. व्हाट ही सेड, वॉट एवर दिस रोल टॉप डेस्क इज देयर इन irreparable condition but I can restore it, means I can repair it, I can bring back this roll top desk to its original position, original status. जो पहले जैसा दिखता था वैसे ही उसको मैं बना सकता हूँ, उसको रिपेयर करके. He thought like that and he thought it is a risk and it is a challenge but he had to accept that challenge. Why do you know? Because he had less money and with that less money he could not buy a new roll top desk. And that's why he thought this e-repair roll top desk can be bought and this can be repaired by himself. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. तो गैरेज के बैक में वो नरेटर का एक वर्करूम था, तो वहाँ पे उसने लाद दिया. I began work on it on Christmas Eve. So on the day of Christmas festival, that is 25th December, he started to work to repair that roll top desk. Okay, I removed the roll top completely and pulled out the drawers. So in that roll top desk there were some drawers. He pulled out means उनको खींचा, वहाँ के जो ड्रॉवर्स थे वो रोल टॉप डेस्क के, वो उसने ऐसे पीछे खींचा. The veneer had lifted almost everywhere. So what do you mean by veneer? Veneer is a thin layer of plastic. See, some people what they are doing, some whenever desks or some tables are there, on that the layer of plastic is coated. एक प्लास्टिक का लेयर ऊपर से कोटेड किया जाता है ताकि वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक चल सके. तो वैसे ही वहाँ का जो वो प्लास्टिक का जो लेयर था ऊपर का रोल टॉप डिस्क का, तो वो जगह जगह से उखड़ा हुआ था, निकला हुआ था. ओके, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. सो व्हाट इज सेड, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. सो व्हाट इज नरेटर इज सेइंग हियर, taken their toll on means damaged. So what he said, just because of water and fire that roll top desk has completely damaged. Okay, the last drawer was stuck fast. लास्ट का जो ड्रॉवर था वो बाहर नहीं निकल रहा था, बहुत खींचने के बाद भी.
I tried all I could to ease it out gently. उसको बाहर निकालने की उसने बहुत कोशिशें की, मगर वो बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था. I stuck it sharply with the side of my fist. उसको जो फिस्ट है, मुट्ठी जैसे बोलते हैं हम लोग, उसका जोर लगा कि उसने उसको वो ड्रॉवर को बाहर निकालने की ज़रूरत की. एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शॉलो स्पेस अंडरनीथ, अ सीक्रेट ड्रॉवर. एंड वेन एवर ही यूज्ड हिज फिस्ट, मुट्ठी उसको निकालने के लिए, दैट वॉज पुल्ड आउट, वो बाहर निकल गया. एंड he had seen that there was a shallow space, एक empty space थी उस ड्रॉवर में. and there was a secret drawer and something was there. और उस जो सीक्रेट ड्रॉवर था, उस सीक्रेट ड्रॉवर में कुछ रखा हुआ था. so what was that? there was something in there. I reached in and took out a small black tin box. so there was one small black tin box. तो वो जो ड्रॉवर था, और वो ड्रॉवर के अंदर भी जो सीक्रेट ड्रॉवर था, उसमें एक टीन का बॉक्स रखा हुआ था, और वो ब्लैक कलर का था. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर. दैट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटर्न ऑन इट अ शंकी हैंडराइटिंग, सॉरी shaky handwriting. so what do you mean by shaky handwriting? that handwriting was not good, that cannot be read clearly. okay, in such a handwriting, that note paper was there. Jim's last letter received January 25, 1915. so what was written there? Jim's last letter received January 25, 1915 was written there. to be buried with me when the time comes. to be buried with me when the time comes. तो उसको क्या बोला गया कि ये जो लेटर है जो मुझे 25 जनवरी 1915 को मिला, ठीक है, तो ये जिम का लेटर है, और ये जो लेटर है मैं जब मरूंगी तब वो मेरे साथ दफनाया जाए, वो लेटर को. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. यू नो, इट इज़ अ बैड मैनर टू सी अदर्स लेटर्स और अदर थिंग्स विदाउट हिज परमिशन, विदाउट देयर परमिशन. ओके, बट that narrator was very curious to know what would be written in this letter, but curiosity got the better of my scruples. scruples means उसका जो हेजिटेशन था कि नहीं ये लेटर खोल के नहीं देखना चाहिए, मगर वो जो उसकी क्यूरियोसिटी थी, उसके मन में जो इच्छा थी वो पढ़ने की, वो बोल रही थी कि नहीं इसको ओपन करना ही चाहिए. और एक तरफ से उसका मन कह रहा था कि नहीं दूसरे का लेटर है तो उसको ओपन नहीं करना चाहिए, मगर उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी इच्छा उसके ऊपर भावी हो गई. ओके, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप. सो इनसाइड द स्टील बॉक्स देयर वॉज वन एनवलप एंड देयर वॉज द एड्रेस. विच एड्रेस वॉज देयर? मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिकपोर्ट, डॉर्सेट. This address was written there. I took out the letter and unfolded it. Unfolded means he take out that letter and he started to read that. Okay, it was written in pencil. That letter was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. And what was written on that letter? That is December 26, 1914. That is means that letter was written on December 26, 1914. That is one day after Christmas festival. Okay, so in this video we have seen first part of this lesson. So this is all for today. The remaining portion we will see in next video. Till then, bye.